দুগৰাকী ব্যক্তি মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এজন হৈছে মণিপুৰৰ আৰু আনগৰাকী হৈছে केरला। पहली बार परसदा आया हम लोग के पास to share like coffee with Karan. We will be having chai with परसदा। आप लोग बिहू मनाते हैं यहाँ पे। वैसे हमारा बेसिकली कॉमन जो हमारे कल्चर में हम केरला में मनाते हैं वो ओनम। हैंडलिंग एनी इक्विपमेंट्स और मशीन्स, वी आर डायरेक्टली हैंडलिंग ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग मीन्स all those things, emotions, physical strength, anatomical structure, everything is there. So हमें ऐसा हम emotion के साथ ही एक इंसान को handle कर सकते हैं। Interesting thing is from last 2 or 3 years onwards we are having a course called as nurse practitioner. Nurse knows what type of instrument is required at what point of time. हॉस्पिटल ले जाने से पहले how can a family member help a stroke or a heart attack patient? You are from Manipur, she is from Kerala. तो आप लोग का जो लव स्टोरी का जो फाउंडेशन है वो कहाँ पे शुरू हुआ? So best thing is that he is very understanding actually, being from a different culture. Actually सबको देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये मणिपुरी है और ये केरला का, that too so different. Even one of my friend, she was staying with me for 4 years and after 4 years only she's saying, when I was teaching my she's having a daughter, so she said when I was teaching her, no, that day I was seeing the map so long like that, no? So that day I was saying, today only you realize that like that, no? নমস্কাৰ, মই পৰশ বৰঠাকুৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেল নিশাৰ কথাকমললৈ। আজি মই দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে আচলতে সংযুক্ত হৈছোঁ। কিন্তু প্ৰথমতে এইটো ক'ব লাগিব যে ভাৰত আচলতে সঁচাকৈ এখন বৈচিত্ৰ্যময় দেশ। এইকাৰণে ক'লোঁ ইয়াৰ পৰা যদি এই মুহূৰ্তত মই য'ত উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ পৰা যদি 100 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ যাওঁ তাত ভাষা সলনি হয়, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হয়, কাপোৰ সলনি হয়, মানুহৰ মন সলনি হয়, সকলোবোৰ সলনি হয়। তথাপিতো যদি মই কওঁ যে আমাক কিহে আচলতে একগোট কৰি পেলাই ৰাখিছে সেয়া হৈছে ভাৰতীয়। আমি যলৈকে নাযাওঁ দেশৰ বাহিৰত আমাৰ প্ৰথম চিনাকিটো হয় ভাৰতীয় বুলি, তাৰ পিছতহে মোৰ চিনাকিটো অসমীয়া হিচাপে আহে। আজি আচলতে বিশেষকৈ এই খণ্ডটোত আমি নাৰ্ছিং যিটো বিষয় সেই বিষয়ে কথা পাতিম আৰু এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ মোৰ সৈতে মই যে প্ৰথমতে ক'লোঁ যে বৈচিত্ৰ্যময় বুলি, এইকাৰণে ক'লোঁ যে যি দুগৰাকী ব্যক্তি মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এজন হৈছে মণিপুৰৰ আৰু আনগৰাকী হৈছে কেৰেলাৰ। প্ৰথমতে মই তেখেতৰ চিনাকিটো দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। এখেত হৈছে ডক্টৰ সুৰ্যেশ মইৰেংথেম্বা। তেখেত আমাৰ বৰ্তমান যিখন স্কুল অফ নাৰ্ছিং আছে কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, তাত তেখেত প্ৰিন্সিপাল কাম ডিন হিচাপে কৰ্মৰত আৰু তেখেতৰ কাষতেই তেখেতৰ সহধৰ্মিনী অৰ্থাৎ ৱাইফ বিনীতা সুৰ্জেশ। তেখেত বৰ্তমান কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ত যিটো নাৰ্ছিং বিভাগ আছে তাত সহযোগী অধ্যাপিকা হিচাপে কৰ্মৰত। মই দুয়োগৰাকীকে পাই পেলাই খুবেই সন্তুষ্ট। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে আজি আমাৰ যিখিনি কথোপকথন হ'ব সেয়া মই অসমীয়াত কৰিব নোৱাৰোঁ, সেয়া মই আইদাৰ হিন্দী বা ইংৰাজীত আগুৱাই নিম। सबसे पहले सर आई वेलकम बोथ ऑफ यू टू माय चैनल एंड ऑल्सो गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? आज पहले बार परसदा आया हम लोग के पास to share like coffee with Karan. We will be having chai with Parasda. Right. So we are very excited to move forward and to share our feeling, our thoughts with Parasda with a cup of chai. Exactly. Thank you so much. Ma'am, to start with, सबसे पहले मैं आपका जो चाइल्डहुड है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, चाइल्डहुड लाइक मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी मदर और मेरे पापा दोनों लोग यूपी में काम करते थे। लाइक मेरे पापा एक्स सर्विसमैन हैं नाउ एंड मेरी मम्मी नर्स थी, एक्चुअली वो भी स्टाफ नर्स थी। तो वो लोग यूपी में रहते थे। बचपन से मैंने भी एट द एज टिल 10 years आई स्टेड विद देम इन यूपी इटसेल्फ। देन आफ्टरवर्ड्स आई मूव टू केरला
पापा मम्मी वहीं रहे. I moved to Kerala and I stayed with most of the time with my grandparents and one of my father's sister, my auntie. Okay. So I stayed with her for a long time with my all other cousins. So बचपन मेरा ज़्यादातर केरला और यूपी ऐसे ही छुट्टियों में चेंज होता है, वैसा लाइफ जिया है मैंने. So केरला तो आपको पता है ऑलरेडी नेचुरल और बहुत सारे कल्चरल थिंग्स के जुड़ा हुआ है, तो वैसा बचपन ऑल सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ, और हमारे फैमिली है लाइक वी हैव लॉट ऑफ मेंबर, लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम था उस टाइम पे. अभी वी आर हैविंग नॉट न्यूक्लियर फैमिली, बट उस टाइम जॉइंट फैमिली था, तो हम साथ में अपने वेकेशंस, अपने सारे सेलिब्रेशन, जैसे आप लोग बिहू मनाते हैं यहाँ पे, वैसे हमारा बेसिकली कॉमन जो हमारे कल्चर में हम केरला में मनाते हैं वो ओनम है. तो ओनम बेसिकली आता है इस अगस्त, जून, जुलाई अगस्त के टाइम पे आता है. तो उस टाइम हम लोग सब फैमिली मेम्बर्स मिलके खाना बनाना, और वो सब चाइल्डहुड में बहुत कुछ शेयर किया है. तो सो दैट्स वाई टिल नाउ हम अपने कजिन्स और फैमिली से बहुत क्लोज हैं. सर एक बात बताइए, देयर वर सो लॉट मेनी ऑप्शंस फॉर यू. आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस था टू परस्यू एनी करियर. नर्सिंग ही क्यों? व्हाई डिड यू चूज नर्सिंग एज ए प्रोफेशन एंड आल्सो एज ए करियर? To be honest, like from my childhood, I was very involved and active in sport activity. Okay. Till 10, I was not good in study. Okay. I used to be the backbenchers. You know, starting means up to class 4 or 5, I was okay type. Then after that, I was involved in sports and activity. So up to 10, my scoring was horrible. Okay. So later on, when I have to go for this +1, +2, that after 10th, when I got admission in 11, I was so humiliated that I have to be in a C grade or D grade class, where A, B are those students who got a higher grade in 10. So I was feeling so much humiliated, and the principal of that college called my mom and was telling like what he will do. So from that moment, that was the teachers parents meeting. So from that moment, I was thinking why I should, why I can't. So I have that inner feeling that I should come to the A grade in the +2. That was in the +1, means 11th standard, in +2 like that. So I work hard. I work hard a lot, and by God grace, I came to like 23rd or 21st position. Okay. With the +2. So I have promoted to A grade classroom. So starting from my childhood, I like to be in the Air Force. Okay. And in the army or in the Air Force, my aim was like that. Okay. So after +2, I and one of my childhood friend, he is now in SCBJ. Okay. He's now an inspector. He and me was childhood friend. We studied in the same school. We sit in the same bench, and we have planned that we'll go to this CDS and army coaching like that. So after +2, we have gone to this one NDA entrance test. Okay. So we got selected, and we have So to you go got selected in NDA. NDA, Okay. and we have to go for interview. So my mom, unfortunately, the call letter was received by my mom. Okay. So he doesn't like us to go to this field. So her aim was to make me go to the medical field, MBBS or BDS, something like that. So he denied. So I say okay. Then we were about to go for a coaching, means we have made the entrance for this PTS exam for MBBS. We didn't get
because we are not interested in that. So we didn't get to that. Then later on we say, okay, let me try. And we went for a coaching in Dehradun. Later on, it was not interesting and it was not in my mind, so it doesn't go well. So at last we have tried, like we in our mind we want to go attached with this army and air force member. So in somehow we got some knowledge or idea that there is a armed forces medical college in Pune, FMC. So they are having this medical seat also and nursing seat also, like that. So we have tried there, and there also unfortunately I got in a waiting list. Waiting list number 3. So I didn't get a chance to admit there in that FMC. Then later on they said that, why don't you try for a nursing? And then again, unfortunately, they took only ladies, not male. Right. So time goes off like that. 2 years without a professional degree, we just prepared and it went off like that. And in one early morning, one of my auntie, is a nurse, his husband is a doctor. He was telling me, like, there are certain opportunities which you can give the title doctor even if you go for the nursing. That time I was not aware what nursing is. It was out of my book. I thought nursing means it is only for girls and they will do only this injection, this and that. That was 25-30 years back. It was in the year 2001, 2002. That was long back. Around almost 24-25 years back. So the scenario of nursing at that time and at present is totally different. Very different. So we also don't know what nursing was at the time, frankly speaking. So he was giving me many scoff, like you can become a practice nurse, you can become a nurse surgeon. So I was motivated, well motivated. I said, okay, let me try once. So I went to Delhi. It was my longest journey. It took me 3.5 days to travel from Manipur. At that time, traveling from Manipur to Guwahati, we travel by bus. In the meanwhile, that bus also got accident, a minor accident, and we have to change the bus again. So the longest journey in my life, it was that time. It took me 3.5, almost 4 days. From Guwahati, we took a train and it went to Dehradun, that Haridwar. Then there, that Himalaya University. That was the first university which I approached for this nursing course. So there also they said that there will be an entrance exam and the scope is not that good because they are offering only for girls, only 5 or 2% only for boys, like that. So there also they told me, why don't you join this BDS? And BDS at that time, the BDS was also like the image of BDS was just like carpenter. So people used to say, why you want to become carpenter? Then I was so confused. So what to do? Then my uncle, my maternal uncle, now he is a principal in charge in Navodaya Vidyalaya. He was there in this one in Mao. Then because of that incident, Manipur incident, he has been transferred to this Dipu. Now he is in Dipu. So he was my maternal uncle, younger one. He used to be with me in terms of education and all. So he took me, he was the one who was going along with me to search all these things. Then at last he was telling, let's go to South. Then we have gone to Bangalore. So to go to Bangalore, from Delhi we took a train to reach Chennai. So when I reached Chennai, the place was superb, neat and clean, superb. It was in the early morning. Then I was thinking, this is like heaven. It looked like very clean and all. The people will be like that. It was in my mind. Then later on, when people started coming,
they doesn't bother about this dress up and all, but their mind and heart was very clean, but they doesn't bother about this cleanliness, about dress up and all. Then I was thinking, oh, how I'll stay here. Then my uncle said, no, we are not going to stay here, we are going to Bangalore. So we moved to Bangalore. Then we have searches for many other colleges, government college, private college, and I was late because the admission used to start in the month of July, August like that. So we're gone there in the month of October, November like that. So fortunately, I got a seat in one of the good reputed college, Padma Shri College of Nursing, and the chairman of that college in present, what do you call, present senior, he is the health minister in Karnataka now. Okay. So he has developed that college. He started with nursing and physiotherapy. Now he has around the big as this Kaziranga University. It's not a university, but it's a group of institutions where it have nursing, physiotherapy, engineering, biotech, and almost around 4,000 to 5,000 students. Just an institute, not even a university. So that is my story. So we got admitted. That this one we got directly contact with the chairman, the minister, present minister. He was the chairman, director come chairman. So we met directly with him. So he was very happy, like, far from Northeast, you're coming here for study. By looking my graph, like from 10, I was in lowest second division, and it grows up like that. He was very happy. Then he was telling, you should improve like that. So I joined there in the first year. I was very proud. I'm feeling proudly to my batch, telling that they, like, I have studied 2-3 years of this science course. So we have a subject, anatomy, physiology, pharmacology. I was well known about that. So people were thinking, oh, he has good knowledge. Like I was so proud. So in the first year, I used to give coaching to them also, and they also comes with me, want to study with me. So in the first year, in anatomy, out of 60, like 30 or 35 only student got cleared. Others were not able to clear. So for the next exam, they used to come to my room. They asked me help. So I was feeling that proudness. So later on, it goes on like that, and I learned Malayalam from them only. Okay. At that time, they were not able to speak English, not Hindi. Okay. I don't have other means to communicate, so I have to adapt to them, and it made me learn Malayalam. In a way, you were in fact forced to actually learn Malayalam. So the Malayalam was not forced. I was also interested. They were very close to me, and I want to interact with them. I want to make a good relationship with them. So to force learning the language was not Malayalam. It was Kannada. Okay. Because at that time, we should learn Kannada if you want to study nursing. Okay. Because we have to communicate with the people. That too only in Kannada. So to make me force in learning language was Kannada, not Malayalam. Okay. Malayalam was my interest and my requirement to be there, and it doesn't force. I was very much happy to learn Malayalam. In the first year, I even start writing Malayalam alphabet also. Okay. So again, Malayalam people used to say that it's very tough language, but it find me easy because it was interesting, and it was my enthusiasm to learn Malayalam. At the same time, I have learned Kannada also. Till now, I used to speak Kannada because I have many friends in Bangalore. Because I have been there in Bangalore for almost 8 years. I have done my UG in Bangalore only, and I have been appointed as a nursing tutor in the same college where I studied. Okay. And they didn't allow me to pursue my PG from other college. They have given me some scholarship. Okay. At the same time, they are telling you study
then you continue your job, and they were giving some park also, so they were not allowing me to go. So even after completing MSc, they told me that you stay here, we'll continue, but because of certain conflicts with the principal, I have to leave, and it was like that. So it goes on like that, and nursing gave me many things which I will not be getting from other profession. In spite telling that my aim was to do like Air Force or something like that, but after my undergraduate, I was being advised or being motivated by one of my friend to go abroad, and I don't know whether it was a wrong turn or right turn. I have a two option to pursue my postgraduate or to work abroad. So whatever I am here, it's because of nursing. It was quite a very impressive journey. अभी मैम आपके पास आता हूँ. जैसे कि हम लोग को मालूम है कि बाकी का जो कोर्सेज होता है उसमें जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स वगैरह होता है, नर्सिंग में भी कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स या क्या क्या सीखने को मिलता है? एक्चुअली बेसिकली पहले यही है, नर्सिंग मीन्स केयर. सो वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको इंस्पायर किया, मतलब इट्स लाइक हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि समटाइम्स फैमिली मेम्बर्स जो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, समटाइम्स नर्स पीपल यूज टू डू दैट. आज के टाइम पे नर्सिंग का सिनेरियो बदल गया है जो पिछले 10 साल में था. जब हम पढ़ते थे या हमारे पहले जिन्होंने पढ़ा, स्ट्रगल किया है काफ़ी इस चीज़ के लिए. स्टिल नाउ स्ट्रगल इज़ देयर, बट सम चेंजेस और सम कंफर्ट आ गया है. बट द थिंग इज़ नर्सिंग ओरिएंटेड हो गया. पहले था कि सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड था, नाउ मेल आर ऑल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स. ठीक है, तो एज वी नो वी आर नॉट हैंडलिंग एनी equipments or machines, we are directly handling human. The human being means all those things, emotions, physical strength, anatomical structure, everything is there. So हमें ऐसा, हम इमोशन के साथ ही एक इंसान को हैंडल कर सकते हैं. तो नर्सिंग में यही चीज़ को पहले इम्पोर्टेंट देकर, पहले तो नर्सिंग मतलब नर्सिंग केयर, इंजेक्शन देना, दवाइयाँ देना, बेसिक केयर्स थे. तो धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस बढ़ते गया. जैसे कि हम एक बेसिक सब्जेक्ट है नर्सिंग का, नर्सिंग फाउंडेशन को करके, अभी उसका नाम नर्सिंग फाउंडेशन है. मे बी जब सर ने पढ़ाई किया था तो उसका नाम कुछ और था, बेसिक नर्सिंग केयर समथिंग लाइक दैट. सो चेंजेस हुए. तो उसमें क्या है, ऑल दोस्त नर्सिंग केयर, कैसे जो बीमार हैं उनके हिसाब से कैसे केयर करना है ऐसे. लेकिन फिर हम लोग के कोर्स में स्पेशलिटीज़ आई. स्पेशलिटीज़ लाइक अभी हम बेसिकली नाउ वी आर हैविंग 5 स्पेशलिटीज़. सो फर्स्ट वन इज़ अडल्ट हेल्थ नर्सिंग. अडल्ट हेल्थ नर्सिंग मतलब उसमें वो नर्सिंग के वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे सिर्फ हम अडल्ट की जितनी बीमारियाँ हैं और उनके केयर्स, इंक्लूडिंग जीरियाट्रिक. जीरियाट्रिक मतलब बूढ़े लोग जो 60 अबव हैं, तो ओल्ड एज में कैसे केयर किया जाता है, और अडल्ट एज में जो +30 अबव लोगों को कैसे केयर जाता है, मेल फीमेल एंड जीरियाट्रिक, वो इंक्लूड करता है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग. दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा, दूसरा जो है साइकेट्रिक नर्सिंग. साइकेट्रिक नर्सिंग एक्चुअली अभी इम्पोर्टेंस में आया है, पहले ये नर्सिंग का पार्ट भी नहीं था, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है. बिकॉज मेंटल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है आजकल, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है. बिकॉज वी नो नाउ ए डेज पीपल बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रेस को फेस करते हैं. तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ा कि नॉट ओनली फिजिकल नीड्स, हमें मेंटल नीड्स को भी पूरी करनी चाहिए. तो वहाँ पे हमारा साइकेट्रिक स्टार्ट हुआ. देन अनदर डिपार्टमेंट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेसिकली आपको पता होगा, हमारे हर गांव में पीएचसी है, सब सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, अर्बन रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं. तो वहाँ पे क्या है, मेनली उन लोगों का मोटो ये है कि कैसे गांव-गांव में जाके ये हेल्थ केयर सिस्टम को पहुँचाया जाए. गांव-गांव में कैसे पता चले कितना एंटीनेटल मदर्स हैं, कितने छोटे बच्चे हैं जिनको हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं हो रहा है, जिनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं हो रही है, या फिर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं.
ये सब कम्युनिटी हेल्थ के थ्रू ही पता चला है कि कैसे कैसे गांव में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उनके हिसाब से क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो नेक्स्ट थिंग जो है वो है हमारा मिडवाइफरी। मिडवाइफरी इज़ नॉन एज ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनाकोलॉजिकल नर्सिंग। सो ये बेसिकली है एंटीनेटल मदर्स, पोस्टनेटल मदर्स और इंट्रानेटल मदर्स। इसमें बेसिकली वही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बारे में सब कुछ जो एक टर्म है वो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनाकोलॉजी में आता है। फिर हमारा एक डिपार्टमेंट नर्सिंग फाउंडेशन, मैंने बोला था जो स्टार्टिंग में जो बेसिक है, जिसमें हमारी ऑल नर्सिंग केयर बेसिक, वो स्टार्टिंग में आपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर उसी से पढ़ते हैं। तो ये मेनली 5 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे नर्सिंग में जो अडल्ट हेल्थ भी कैरी कर रहा है। एंड वन मोर डिपार्टमेंट इज़ पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, सॉरी टू से, सो दैट इज़ नॉन एज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। वो बेसिकली जैसे हमने आपको बोला अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में अडल्ट लोग प्लस जीरियाट्रिक ओल्ड एज को ऐड करते हैं। तो पीडियाट्रिक में लाइक यू नो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स, हो वैसे पीडियाट्रिशियन नर्सेस भी होती हैं जो बेसिक फोकस ऑन द किड्स, जो लाइक टॉडलर, प्री स्कूलर, इन्फेंट से लेके जितना एडोलसेंट तक के एज के बच्चों को हैंडल करना है। सो बेसिकली ये 5 डिपार्टमेंट है नर्सिंग में और सबके अपने अपने फंक्शंस हैं ताकि स्मूथली हर नॉलेज जैसे बेसिक हर बट ये कब पढ़ना होता है जब ड्यूरिंग योर मास्टर्स, बट यूजी में है इन सब के सब थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं। यूजी में आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने, बट व्हेन यू गो फॉर पीजी उस टाइम पे आपको आपका पसंद का स्पेशलिटी ले सकते हैं। अभी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जैसे हम लोग अक्सर हॉस्पिटल्स में देखते हैं डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब कर दिया, उसके बाद जो एक्चुअली केयर लिया जाता है दैट इज बीइंग टेकन बाय द नर्सेस। तो यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि नर्सेस को जो मेडिसिनल नॉलेज, दवाइयों का जो नॉलेज होता है वो भी अलग तरह से सिखाया जाता है? जी, वी हैव वन सब्जेक्ट नॉन एज फार्माकोलॉजी। एक्चुअली अभी हमने देखा केयू में हमारे पास फार्माकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है। सेम लाइक वी हैव वन सब्जेक्ट, बट हम जब भी कोई मेडिकेशंस देते हैं एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस। वो चीज़ है, हम इसीलिए क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेते हैं क्योंकि वॉट एवर वी आर टीचिंग इन बुक्स इट्स डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल सिनेरियो। जब तक हम डायरेक्टली जो चीज़ें नहीं करते या डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट किया चीज़ें या एक्सपीरियंस किया चीज़ें विल टीच समथिंग एल्स। सो वही है, जब हम क्लिनिक्स पे जाते हैं वहाँ पे ये जो ड्रग्स या दवाइयाँ कैसे हैंडल करना है, तो ये सब हम कैसे सीखते हैं व्हेन वी आर लर्निंग फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी एक पार्ट है हमारा जो अभी जब हम अभी सेमेस्टर वाइज हो गया है हमारा नर्सिंग कोर्स, पहले ये ईयरली वाइज हुआ करता था। सो इन सेमेस्टर 3rd एंड सेमेस्टर 4 वी आर हैविंग दिस डिपार्टमेंट। सो उसमें से हमें बेसिक नॉलेज मिलते हैं हाउ टू हैंडल द ड्रग्स, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग वी हैव टू एडमिनिस्टर ओरली, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या इंट्राओशियस, स्पाइनल कॉर्ड में क्या देना है, बोन्स में क्या देना है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स हम सीखते हैं, बट वी लर्न मोर व्हेन वी विल डायरेक्टली गोइंग टू ए एक्सपेरिमेंटल एरिया लाइक टू हॉस्पिटल्स। सर अभी आपसे मेरा एक सवाल है, हाउ मच इज क्लिनिकल नर्सिंग डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिया? Okay, just carry forward or addition to what Vineetha has taught, like as you also asked, what degree or what importance nursing should focus on pharmacology. So as he has already told that there are 5 specializations. Those 5 specializations have a different drugs affecting on different particular types of person. Exactly. Old age, pediatric, mental health, gynecology or antenatal obstetric, then child health. So who are up to BSc, up to UG, it is a basic course. Okay. So people may be knowing or may not be knowing, like the same syllabus what the MBBS are studying, the same syllabus the nursing are studying. Okay. BSc nursing. Okay. The only difference is they have more exposure in practical. They will be having
what you call, as I told, practical exposure. They were allowed to do surgery, dissection, more clinical oriented. They will be allowed to do experimental to the patient, but nursing will not be allowed. Interesting thing is, from last 2 or 3 years onwards, we are having a course called as nurse practitioner, where we can prescribe medication, where we can diagnose treatment, simple minor illness, that too in that different 5 different area. We have clinical practitioner in mental health, we have clinical practitioner in gynecology and obstetrics, we have clinical practitioner in pediatric, community health. At the same time, this medical surgical department has a sub-specialization. We have around 11 system. Each 11 system has 11 department like ENT, cardio, kidney, we call it nephrologist, then GI, then reproductive, musculoskeletal, we call it ortho. In that also, the nursing also having that specialization. So as you told, clinical experience and the teaching experience, it's hand to hand. So before going to clinical, you have to have the theoretical knowledge. Those theoretical knowledge has to apply in clinical area. So those who don't have theoretical knowledge, they will not be apply or perform the clinical activity. So clinical activity, it's same important as theoretical knowledge. So if you want to teach a student, long time back, those who doesn't have clinical experience, they were not taken as a tutor. Because that will help in educating the nursing student. They will have theoretical knowledge as well as clinical knowledge. So once you complete, means long time back, now also it's following in some of the reputed colleges and all, they will prefer this clinical experience more than teaching experience for the starting time. Because after getting that clinical knowledge, they will implement those knowledge at the time of teaching. So both are important. One is in training, theoretical, one is in training and caring the patient. So if you don't have clinical knowledge, you will not be able to implement to the nursing student. In the colleges or school, we have labs. Before sending the student, we will be training to the labs. Then only they will be sent to the clinicals. So if they don't know how to do injection, how to do the procedure, it will be very difficult to do in the clinical setup. So both are right hand and left hand. अभी जैसे मेरे मन में एक सवाल है. After hearing from sir, can a nurse perform surgery? तो अभी जैसे मैंने बताया कि some minor surgical procedure कर सकता है. Even the MBBS is just nothing. It's a UG course, UG degree. After MBBS, they should go for MD or MS. It is master degree. After master degree only, if they want to become a surgeon, then they have to go for a 2-year course. So it's not easy to become a surgeon actually, but in terms of nursing, there are different types of nurse. We call it OT nurse, who can work in OT, ICU nurse, who are specialized and who are trained and who have experience in performing activity nursing care in ICU. And NICU is nothing for neonatal, those newborn babies का जो ICU इसको हम बोलते हैं NICU. तो वहाँ पे काम करने वाला नर्स को हम बोलते हैं NICU expert nurse, specialized nurse. So there are many different type of nurse. So in the common man, nurse means single person, but nurse has many hands, like many roles, many active means many images and many subspecialization. So in OT also, a doctor need 90 to 95% help from the nurse who is going to help them,
who is going to assist them. In an OT theater, there is an OT table where only 1 or 2 doctors will be available. One doctor will be main surgeon, another doctor will be assistant surgeon, and one will be anesthetist, who will be giving anesthesia. The other 4-5 members will be nurse. Scrub nurse, circulatory nurse, like that. So if the doctor says, I want seizure, he will not ask, he will get the seizure from the nurse only. Circulatory nurse. So the nurse knows what type of instrument is required at what point of time. Okay. If the nurse is not performing his role or her role, the procedure will be collapsed. Right. If sometimes the doctor used to throw the instrument at the face of the nursing or the helpers, but at the end he will be apologizing. So that is because of tension or stress, that professional tension. He also think that if I am not doing the thing in proper time, we may lose the patient life. That is one more thing. Apart from the nurse, there will be some OT technician who will be maintaining all the instrument in the OT, but the procedure will be assessed only by the nurse. So there is 2 type of nurse, as Vineetha says. One is scrub nurse and the other is circulatory nurse. Circulatory nurse will not come near to the OT table. He will be like you may also be seeing in the movie and all, the one who is to come out, take the blood or thing inside. That is circulatory nurse, who is not involved in the operation procedure directly, but indirectly he is helping from outside and all. In circulation. Like any instrument, any communication to be done, or any requirement, he will go out, come inside, but he do not come in contact with the patient. The area is fully sterilized. Okay. So the nurse who is helping, means who is standing near to the patient, near to the OT table and helping the doctors, we call it scrub nurse. Okay. So he is fully sterilized and he knows in and out about the procedure, tip to plus. So one interesting thing, if the doctor is just a junior doctor or just a fresh doctor, he will be getting the education training by the senior nurse. Okay. Most of the time. So until he become expert, his or her mentor is the nurse. He will be telling this, that, this to be done, what your seniors will be asking from you, demanding from you, what you have to do, what not to do. That is the thing. So an experienced nurse, it's 90 to 95% equivalent to the doctor who is performing. Even sometimes the doctor say, you continue. Okay. He will ask the nurse to continue. If everything is settled, stitching, swiping, absorb means suctioning, many other procedures left. Only that main surgical part procedure will be conducted by the doctor. If the patient is stable and he knows that the nurse can handle, he will ask, you continue, you follow, take over me. He will go outside, he will be completing that. That must equivalent. If the nurse is having that much knowledge, that much skill. So the standard of nursing in India and the standard of nursing in foreign countries abroad is totally different. And one more interesting thing, in abroad, the salary, the respect, the status of a nurse as per their education, as per their experience, same. Okay. If the doctor is getting $20,000 a month, the nurse also will get $20,000 a month. So they are almost equally treated. Equally treated because they have the equal knowledge, equal skill. So that is lacking in India. हमारे यहाँ पे नर्स जो है in some of the institute, college and all, पैसा दो पास हो जाएगा, ऐसा वाला भी है. और ऐसा इंस्टीट्यूट कॉलेजेस भी है, वहाँ पे फुल्ली ट्रेन होता है, फुल्ली चीज़ होता है, उनका स्टैंडर्ड अलग होता है. सो उनका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
डॉक्टर के पीछे पीछे लेकर घूमते हैं, यही तो देखते हैं या और उसका इमेज वही है, तो डॉक्टर बोलेगा वो सुनना है वो बोलता है, तो एक्चुअली वो नहीं है। डॉक्टर अलग प्रोफेशन है, नर्सिंग अलग प्रोफेशन है। In the scenario of treating the patient, there is doctor in hand, nurses in hand involved, those physiotherapists involved, nutritionists involved, pharmacologists involved, and many others. So the main person who is coordinating all this other profession is nurse. Doctor to patient through nurse, doctor to technician through nurse, doctor to pharmacist through nurse. Yes, and as you were telling me, asking me how much knowledge the nurse should have, the pharmacological knowledge. Even doctors also doesn't know what type of drugs is coming out. This MD means what you call MR. Newcomer. They will come and tell that this is the thing, this is thing. So in most of the time, the doctor will prescribe. Sometimes they may prescribe wrongly in terms of dose, in terms of route or something like that, means how to give. So if the nurse knows the knowledge, he will confirm, doctor, what you have written, is it correct? To me it is like this. Should we cross check it? Sometimes it happens, and doctor also say, it was wrong. If the nurse doesn't know that, the patient is going to suffer. Instead of giving IM, if he is given IV through vein, patient will collapse. And instead of giving 50 gram, the doctor has prescribed 250 gram, 500 gram, the patient is going to affect. Right. अभी मैम आपके पास आता हूँ, गोइंग बाय योर एक्सपीरियंस फॉर सो लॉन्ग, एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है यहाँ पे, कंसिडरिंग इंडिया एज ए होल, स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। अभी ये तो किसी को मालूम नहीं है कि अभी मेरा हार्ट अटैक होगा या फिर 5 मिनट बाद आई विल सफर फ्रॉम स्ट्रोक। हॉस्पिटल ले जाने से पहले हाउ कैन ए फैमिली मेंबर हेल्प ए स्ट्रोक और ए हार्ट अटैक पेशेंट? ओके, सो एक्चुअली बेसिकली अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो गया, क्योंकि अभी ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक जो है सडनली हो जा रहा है। इवन वी कांट डिस्क्राइब। पहले जब हम पढ़ते थे तो हम ऐसे सिनेरियो पढ़ते थे कि रिस्क फैक्टर्स मतलब एक चीज़ है कि किसको ये ज़्यादा होता है, कोई भी बीमारी पड़ते हैं। जैसे कि आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट हेल्थ नर्सिंग और मेरी सब स्पेशलिटी है कार्डियोथोरेसिक। सो हम मेनली हमेशा सीखते हैं कि ये, जैसे कि आपने बोला स्ट्रोक, या फिर हम देखते हैं एक हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक का हमेशा एक रिस्क फैक्टर पूछते हैं कि कैसे ये हो रहा है। पहले क्या था कि आवर एनवायरनमेंट वाज क्लीन, वॉट एवर वी आर ईटिंग, मोस्टली हम लोग अब प्रेफर करते हैं बाहर से ज़्यादा खाना, पहले घर में ही सब कुछ करते थे। तो डाइट पैटर्न चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, वर्किंग पैटर्न चेंजेस हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, स्ट्रेस बढ़ गया, बर्डन्स बढ़ गए कंपेयरिंग टू अदर। इवन देखिए न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली भी, इवन व्हेन वी वेयर इन जॉइंट फैमिली, आई थिंक बर्डन्स ऑफ स्ट्रेस, बर्डन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एवरीथिंग वेयर शेयर्ड अमंग आवर फैमिली मेम्बर्स। तब चीज़ें कुछ कम होती थी। आजकल क्या है, पहले हम पढ़ते थे कि हार्ट अटैक मतलब आफ्टर द एज ऑफ 60 or the people after the age of 55 for females because of some hormonal changes and all. So अभी क्या होगा, सडन हो रहा है, और इवन वी कैन सी इट इन द एज ऑफ 20s ऑल्सो। आपने भी देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं जो फूड बहुत कंज्यूम करते हैं और फूड ब्लॉगर्स बोलते हैं, जिनको खाना बहुत खाते हैं। सडनली वो लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, सडनली हम सुनते हैं कि नेक्स्ट डे उनका डेथ हो गया। रीज़न क्या है? कार्डियक अरेस्ट। सो ऐसे लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से भी ये सब हो रहा है। सो दिस थिंग्स आर कॉजेस। और दूसरा थिंग, अगर सडनली हमारे घर में ऐसा हो रहा है, एक्चुअली मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऐसे हमारा हार्ट जो है, हम जानते हैं कि हार्ट जो है वो सबसे सेफेस्ट और सबसे इनवॉलेंटरली हमेशा काम करता एक चीज़ है। हम सोएंगे तब भी हार्ट काम करेगा, इट वॉन्ट स्लीप विथ अस, इट विल वर्क देयर ऑल्सो। सो इट विल पम्प ऑल ओवर द बॉडी ऑल द ब्लड्स, बट उसको भी ब्लड का ज़रूरत होता है। तो समटाइम्स इसके वजह से और बहुत सालों की वजह से मसल्स में चेंजेस आ सकते हैं। मायोकार्डियम के द लेयर ऑफ मसल विच इज़ इन हार्ट कैन चेंज। सो इन सब की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है।
तो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना ज़रूरी है आजकल के यंगस्टर्स को भी, लाइक अल्कोहल कंजप्शन, या फिर मोर देन अल्कोहल कंजप्शन आई वुड से दैट स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस. सो दीज थिंग्स आर देयर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इट इज़ हैपनिंग. और अगर हम आते हैं कि इसको कैसे बचाएं, नॉर्मली तो हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपके घर में कोई एनी पर्सन फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, इट कैन बी डॉक्टर्स, इट कैन बी फार्माकोलॉजिस्ट, इट कैन बी नर्सेस, एनीबडी अगर है तो ठीक है, उनके लिए एक ड्रग ऑफ चॉइस है नाइट्रोग्लाइसरीन, जो हम सबलिंगुअल रख के जीभ के नीचे रख के पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं फॉर सर्टेन टाइम के लिए, जैसे कि उनको सडन पेन हो रहा है हार्ट में तो उसके लिए. लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो हमें उनके सिम्टम से पता चल जाता है कि पेशेंट, वी विल पैल्पेट पेशेंट को, जैसे अगर कोई नीचे गिर जाता है हम सडनली क्या करते हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं कि नहीं, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, या फिर जो कॉमन इंसान होगा वो भी क्या करेगा, हाथ ऐसे पकड़ के देखेगा कि पल्स चल रहा है कि नहीं. अगर इसमें कोई भी ऐसा लग रहा है कि महसूस नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो मोस्टली बेसिक थिंग जो घर पे हम कर सकते हैं वो है CPR. CPR इज़ क्या है, एक्सटर्नल मसाज, व्हाट इज़ यू आर गोइंग टू गिव टू द हार्ट. ठीक है, सडनली हार्ट को एक प्रेशर का ज़रूरत है जो इंटरनली नहीं कर पा रहा है, उस टाइम आपको एक्सटर्नली यू हैव टू गिव इट टू द पर्सन. तो हम क्या करते हैं, CPR कॉमनली आपने देखा होगा हार्ट डिपार्टमेंट में इसके ड्रिल्स होते हैं, इवन आर्मी पीपल हो या कोई भी हो उनको सिखाया जाता है कि क्यों ज़रूरत है, क्योंकि सडनली रास्ते में जा रहे एक इंसान गिर रहा है, हमें पहले देखना है उसके सिम्टम्स क्या है, सच में स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, हमें नहीं पता हो. हाँ, अगर पल्स कम हो रहा है, रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो गतिविधि है वो कम हो रही है, तो हमें सडनली उनको कार्डियक मसाज देना चाहिए. और इफ़ पॉसिबल, वहाँ पे तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, तो आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा हम माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं. अगर बच्चा होगा तो हम नाक और मुंह को मिला के माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देंगे, और अगर अडल्ट होंगे तो उनको पूरा मुंह को ढक के पूरा माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं. ब्रीथिंग भी देना है, साथ साथ में ये कार्डियक मसाज जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, वो भी प्रोवाइड करना है. तो ये हम बेसिकली घर में कर सकते हैं अगर हमें सिम्टम्स पता चल रहा है, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इफ़ इट इज़ हैपनिंग, सो वी डोंट हैव दैट चांस. और फैमिली मेम्बर्स भी इतने क्यूब नहीं है, क्योंकि सब लोग क्या होता है सर्टेन टाइम में एंजाइटी हो जाता है, पैनिक हो जाता है, तो सोच नहीं सकता है. तो बेसिकली जो हम सबको सिखा सकते हैं दैट इज़ द थिंग CPR. अगर CVAB है या फिर हार्ट अटैक है या कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई इज़ रिड्यूसिंग एनीवेयर, हम वो सर्टेन मसाज देने से वो उस टाइम पे शायद थोड़ा ब्लड सप्लाई होकर रुक सकता है. सो ये चीज़ें हम कर सकते हैं. अभी सर थोड़ा सा लेट अस कम आउट ऑफ द सिलेबस ना, थोड़ा सा आप लोग का जो पर्सनल लाइफ है उस पर आई लाइक टू डीप डाइव इनटू. यू आर फ्रॉम मणिपुर, शी इज फ्रॉम केरला, तो आप लोग का जो लव स्टोरी का जो फाउंडेशन है वो कहाँ पे शुरू हुआ? As I told you, like I have moved away from Manipur since 2001. I have a good taste with my family. To build my career, I have to move out because we don't have a good education system in Northeast, especially Manipur. It's a little bit detached from other state also because of transportation problem. So actually I have been, and it's like till now I am taken care by my maternal auntie, means my mom younger sister. Okay. My mom used to feel jealous when I am being very much attached with my auntie, because I love more than my mom, my auntie. If anything happens to her, my feeling, it's like that I lost someone who is very much near to me, and my mom also knows that, and sometimes he used to get jealous also. So my mom is a central government employee, and he used to go by 8:30 like that. He'll come by after 5:30 to the home. So in that whole day, my auntie used to take care of us.
starting from preparing for school, after coming back, taking care. I used to ask my pocket money from auntie only, not from my mom. But I used to steal money from my mom. Then my auntie says, "You have to study." So don't bother. And I went to Bangalore, as I told you earlier. And like I was not that interested in Manipuris. Like I feel little bit complex. That story, 11th standard, 12th standard, and they are little bit bozy type. And we are from middle class family, and where I used to do schooling, I did from Don Bosco, where all the students are from high class family, and they used to Bully. tease others, and their mentality is different. I had them, so from that time only, like, but my auntie wants me to get married with this one only Manipuris, but I make them understand somehow, and they also don't bother. So I went to Bangalore. Then as I have mingled with Malayalis, so in my classmate, my juniors, there were many what you call crush on me, most of the Malayalis. So and I have also means attached with this South Indian, so I like them, their culture and all. So I have completed, as I told you, after my UG, I have been working in this one, the same college where I studied. Then one of my friend, she was also crush on me. So she has gone to this one, Amethi, the polling station of Rahul Gandhi, Sonia Gandhi. They have their own nursing college over there, and that hospital is Asian third largest community-based hospital. So they have started the nursing with the GNM. Then I have she contact me. They need some this one tutors, and it was started by one of the like it is. Ma'am contacted. No, not ma'am. Okay. He's junior, very much junior. So the batsman, my batsman, that nursing college is started by Malayali only, because nursing is very much related to Kerala and Manipur and few from Tamil Nadu and all. So I feel it will be similar this culture and all from Kerala and Manipur also, somewhat similar cultures and all. So as it's being a Rahul Gandhi, Sanjay Gandhi, Sonia Gandhi's own hospital, they have this one guest house over there, and every month they used to visit there. So they want those administrative pros from army retire or this one what do you call Command. pilot retired people. They want a strong administrative thing, and the lady who started there was also a retired brigadier. That too from Kerala. Kerala. And that principal and the batchmate of mine were from the same district, and they have some connection. So she joined there. So after 1 year, they want to improve or increase the number of faculty, and also he just contact me like, why don't you come here? It's a good place, and obviously it was a good place. So I went there. Then I want to again pursue my UG, and they told me, you go back, we'll recruit you again after your PG. Then after PG, I went there again. After my master, I went there again as a lecturer. Then after 1 or 2 years, her elder sister is like Malayalis, somehow they have contacted, and she has joined as my sub-junior tutor after completing BSc, because his parents was there in UP, and that brigadier madam, and they have some connection, and they joined there. Then I don't know, it might be it is a almighty call or not, that her sister,
she used to be working under me, and they used to stay near to me only. Then one fine morning, I think so, when he was talking, he used to come to my quarters for sometime dinner or lunch time. So he was talking with her. Okay. So she gave me the phone, telling that she's my sister, just talk to her. That time I think she was studying in second year, something like that. But that time he was so egoistic. He cannot talk even Malayalam also. Like any other girl. So like during conversation he was not talking like that. But when I hand over the phone to his sister, he was complaining to say, I used to get here, and I said, I will see you. I will teach you. Surely you will be coming here. I'll see you like that. So like that it passed out like that. And so that incident goes off like that. So I was not knowing that time that she will be coming there or not. Then after 2 years, he joined. Then somehow we got emotional attachment. Then their parents were against that, and he has run away from home. Okay. And she wanted to do master, so we make her to complete master. So around 4 years they were not agreeing. So after 4 year or 4.5 years, the parents, they were not talking to her also. So later on the 5th year, they make a call, like they also get understanding what to do. Then till now it's going on. Okay. तो मैम आप मुझे एक बात बताइए, दिस इज ए क्वाइट अ नाइस लव स्टोरी. आप मुझे एक बात बताइए, सर का एक क्वालिटी बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और एक क्वालिटी बताइए जो आपको बहुत बुरा लगता है. शायद ये दोनों एक ही है. अच्छा, ओके. वो क्वालिटी भी है, और समटाइम्स आई फील कि वो लाइक क्वालिटी कभी कभी होता है ना, कुछ क्वालिटीज़ जो आपके लिए ख़राब भी हो सकता है. सो बेस्ट थिंग इज़ दैट ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली, बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर. एक्चुअली सबको देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये मणिपुरी है और ये केरला का, दैट टू सो डिफरेंट. इवन वन ऑफ माई फ्रेंड, she was staying with me for 4 years, and after 4 years only she's saying, when I was teaching my she's having a daughter, so she said, when I was teaching her, no, that day I was seeing the map so long, yes, like that, no? So that day I was saying, today only you realize that, like that, no? So ऐसा हुआ है. बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत डिफरेंट हैं. हमारे कल्चर्स, हिंदू कल्चर हम फॉलो करते हैं, बट उसमें भी बहुत सारे हैं कल्चर, फूड, इवन क्लोथ्स, सब कुछ बहुत सारे डिफरेंस हैं. तो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट इस चीज़ में एडजस्ट होने में वी बोथ स्ट्रगल. एक्चुअली मैरिंग इज़ नॉट at that age, you don't understand, you just think that this is a person, and he is, I should not say he is elder than me, 10 years elder than me. He is very emotionally attached and very supportive. अभी भी मैं थोड़ा बचपना करती हूँ, but he used to do that. हाँ, तो ऐसा होता है कि समटाइम्स कि कितना अंडरस्टैंडिंग इंसान आपके लाइफ में चाहिए. तो सब लोग सोचते हैं कि हमारे टाइम में हम लोग साउथ इंडियंस को ही प्रेफर करेंगे, ऐसा होता है. बट व्हेन आई मेट हिम, तो ही वाज सर्टेन टाइम बहुत केयरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव ही बोलूँगी. बट द थिंग इज़, उनका हेल्पिंग मेंटालिटी ऐसा है ना, इफ़ ही डोंट हैव ऑल्सो ही विल गिव. For that, many times I saw him that he is suffering, maybe in money or many things. Sometimes he can have many things in luxurious way, whatever he is doing or whatever he is earning. Very frankly, I am saying. But sometimes because of family or because of us, his family is not about me and son. He take care of his mother, his brother. Brother is also having a son. His maternal sister is there, very close to them. Not about his family.
he stand with me whenever I need, also whenever my parents also need. फिजिकल प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको हमेशा, तब भी साथ दिया. तो ये है कि इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि चुपचाप कोशिश करते हैं कि कितना भी बुरा लगे अंदर से, आगे वाले को वो महसूस नहीं करे. इनका ये पॉजिटिव थिंग है कि कभी गुस्से से नहीं बोलेंगे. बोल भी दिया तो अगले दिन वो छोड़ देंगे, या फिर पसंद नहीं है तो उस आदमी से बात नहीं करेंगे, बट उसको वर्लेंट नहीं करेंगे, वल्नरेबल नहीं करेंगे उस सिचुएशन को. वो सब ठीक है, बट ये जो गिविंग वाला चीज़ है ना सर, वो कहीं ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि सर्टेन टाइम में वो बाद में आप देते ही रहोगे, और आपको कभी कभी एक टाइम आएगा कि रिग्रेट होगा. अभी क्या बोलते हैं, नहीं सबको हो जाने दो, हम कर सकते हैं, इसलिए मेरे ऊपर सब लोग डिपेंडेंट है. या समटाइम्स सम पीपल यूज टू आस्क हेल्प, उस टाइम सर इजली दे देते हैं. इफ़ ही डजंट हैव, वो अरेंज करेंगे कहीं से. उसके बाद शायद ये स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो आगे वाला को भी नहीं पता होगा. बट सो इट्स हिज गुड क्वालिटी, बट सेम टाइम कभी कभी मुझे लगता है कि ये कभी कभी प्रॉब्लमेटिक भी है. और आप लोग का जो शादी हुआ था, that was in Manipuri style or in Kerala style or in both? अब काजोल और क्या नाम है, शाहरुख खान का शादी नहीं, अजय देवगन, तो अजय देवगन, काजोल और अजय देवगन, वो दोनों कितने शादी किए, 2 या 3 शादी की तरीका. एक पंजाबी स्टाइल, एक ये स्टाइल, और एक दोनों का कमन वाला. हमने भी हमने मन भर के शादी किया. एक तो कोर्ट मैरिज, सबसे पहले कोर्ट मैरिज सेफ. तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा, मेरे आंटी लोग बुलाए कि ऐसा कैसे चलेगा. तो ऐसा कैसे, his brother is like he is only the young eldest son of mine. करना ही करना है, हमारे ऐसा नहीं होते, सोसाइटी होती, एवरीबडी इज लाइक दैट. सो उन्होंने भी, और दैट वाज अ ग्रैंड थिंग. व्हाट मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती. मेरी शादी बहुत डिफरेंट है. इवन इफ एनीबडी चेक्स माय फेसबुक आल्सो, दे शो माय आवर मैरिज फोटो इज देयर. सो बहुत एंटायरली डिफरेंट. आप लोगों ने देखा होगा साउथ में हम साड़ी पहन के शादी करते हैं. in Manipuri culture, like we used to wear potloy, one dress is there. अभी राउंड वाला, अभी जब रणबीर हुड्डा ने शादी किया तो सबने उस पर फोकस किया. So I said on that day, देखो अभी फोकस हो रहा है, but we have already done these things. उसका क्या डिमांड था, वो बचपन में वो डोली, महारानी वगैरह डोली में रहता ना, उसमें बैठना है. बैठने के बाद बोले हमको उतारो. और मैं डोली पे बैठ के, मुझे नहीं पता था कि लाइक ये जो डोली के साथ जब जाते हैं, वो जो प्रोसेस जाता है तो बैंड्स बजते हैं. तो क्या होता है, घर से पालकी बोलते हैं. हाँ, पालकी. तो बट हिंदी में जैसे डोली. तो उस पर बैठा तो दिया. बैठने के बाद सर के मामा जी थे, तो वो छूते नहीं है, छूना नहीं चाहिए से. तो और भी हैं, बट वो साइड से जा रहे थे, और फैमिली मेम्बर्स. तो मैं इस पर बैठ गई, और जब उठाया और ये सॉन्ग शुरू हुआ तो लोग घर से बाहर आकर देखने लगे. तो फिर मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील हो. सडनली मैंने सोचा, मैंने क्या ही पूछ लिया इन लोगों से. सबने पूछा, देखते हैं ना, लाइक बहू आया कैसे है, आसपास के लोग निकल के देखते हैं, नया बहू आया तो उसको. उनके वहाँ पे नहीं होता है, हम लोग के वहाँ पे तो आप नोटिस में होता है. अगर आप गली में जा रहे हैं, अपने गली में आ रहे हैं, तो सबकी गली निकल के आएगा, देखेगा. वही चीज़ें उसको क्यों देखने क्या हो रहा है. और जैसे ही घर पे पहुँचे तो दैट इज़ द इमोशनल थिंग. और बहुत अच्छा लगा. मेरा भाई मीन्स नॉट माइन, ही इज़ ब्रदर, बट ही इज़ माई भाई ओनली. सो मैं भैया बोलती हूँ. एज पर क्या बोलते हैं, रिलेशन तो वो छोटे हैं, बट एज में बड़े. तो भाई आकर वो आग जलाते हैं. जब बहू घर के अंदर जाना होता है तो वो बुरी नज़र सब जाने. सो आई वॉज थिंकिंग, वो देन आई फेल. जब शादी हो रही थी तब क्या हुआ कि कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज नहीं पता है. वन गर्ल वॉज देयर, वो मुझे बता रही थी कि आपको माला डालना है, आपको वॉक करना है, ऑल दोस थिंग. मेरे शादी के वीडियोस में है, वो देखे. तो दैट टाइम आई डोंट नो देयर लैंग्वेज, सो वो एक्शंस में बोल रही है. तो उस टाइम जब मुझे बैठा दिया गया, फिर मैं सोच रही हूँ, ओ माय गॉड, मैं कहाँ आ गई, कैसा शादी कर रही हूँ, लैंग्वेज भी नहीं पता, और सामने ऑल ऑफ माई इन लॉज, लाइक मदर्स की सिस्टर्स, और एवरीबडी सिटिंग. उन लोग को देख के और टेंशन हो गया. उसके बाद जब मैं घर में गई और ये भाई वाला इंसिडेंट हुआ, देन आई रिलैक्स. ओ नहीं, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई हैव टू बी होल लाइफ. सो नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ. सो फिर धीरे धीरे अभी अडेप्ट हो रहे हैं, अडेप्ट हो चुके हैं. अभी हिज मदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट,
but very loving actually. Okay. She used to share everything with us, and what she wants means कि मेरी बहू को कोई नहीं बोलना चाहिए perfect things. So वो love, वो thing is there in their family. तो same सर जब मेरे घर में जाते हैं तो मेरे पापा को भी थोड़ा प्राउड फील होता है. There was one day when he was saying नहीं नॉर्थ ईस्ट पीपल से हम शादी नहीं कर सकते बिकॉज दे कैन ईट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. ऐसे डराते थे, शादी नहीं करना है. तो उस सिनेरियो से नाउ इफ ही वांट टू बाय एनीथिंग ऑल्सो ही विल आस्क सर whether we can buy this, whether this quality is good or not. तो ये it's because of interaction, it's because of love and affection. So ये चीज़ें हैं फैमिली में. ये सवाल मैं सर से नहीं करूँगा, आपसे ही करूँगा. Prior to working in Kaziranga University, इसलिए मैं सर से नहीं कर रहा हूँ because he is from Manipur and he has an overall understanding of North East. तो आपको यानी कि North East in general and Assam in particular कैसा लगा? नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली मेरा एक गलत फहमी ख़त्म हो गया. वी साउथ इंडियंस, आई यूज टू से फॉर ऑल साउथ इंडियंस एक्चुअली, हमें क्या लगता है कि द पीपल हु इज़ हैविंग मंगोलियन फेसेस आर नॉन एज नेपाली. हमारा एक मिसकंसेप्शन है. इवन तो व्हेन आई गॉट मैरिड मेनी पीपल आस्क मी वेदर यू मैरिड टू ए चाइनीज पर्सन और लाइक दैट. क्योंकि डोंट टेक इट एज अ रूड एक्चुअली, क्योंकि हमारे साउथ में लोगों को पता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में लोग ऐसे दिखते हैं. इवन द भी बोलेगा हम लोग आप लोग को कैसे नाम देते हैं. सो एक्चुअली वो जैसे गांव से कभी निकले ही नहीं, बाहर आए ही नहीं. और मुझे भी अब डिफरेंस पता चल गया कि त्रिपुरा में लोग कैसे दिखते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड टू ट्रैवल, आई स्टेड इन त्रिपुरा, आई स्टेड इन सिक्किम. सो आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि लोग कैसे दिखते हैं, कल्चर वेराइटीज़ कैसे, ड्रेसिंग कैसे. तो साउथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक शायद बॉम्बे के आगे शायद इधर आए ही नहीं होंगे, तो उन्हें आइडिया ही नहीं है. तो एंटायरली डिफरेंट है, ठीक है. और हमारे यहाँ हम जैसे हमने बोला ना, हम लोग सिबलिंग्स, कजिन्स, बहुत सारे क्लोज रिलेशनशिप. आसाम में भी मैंने वो चीज़ फील किया है कि कल्चरल रिच है आसाम. इवन क्लोथिंग्स, मैनी क्लोथिंग सिस्टम इज़ लाइक हमारे साइड में जैसा होता है वैसे ही है फीमेल्स का. मेल्स में भी मैंने देखा, तो ये कल्चरल को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आसाम में. तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं बट फूड्स आर डिफरेंट, थिंग्स आर डिफरेंट. तो रहने का तरीका और आपका जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ठंडी गर्म, जैसे केरला में गर्म ठंडी होता ही नहीं है. सो ठंडी गर्म ये सब यहाँ शुरू हुआ है, तो यहाँ सब डिफरेंट दिख रहा है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट Kaziranga. So I told you that I worked in Sikkim, I worked in Tripura, I worked in UP. Some short period I worked in Odisha also. I worked in Bihar. That too in the part of North Bihar, South, like it is connected to the North West Bengal. किशनगंज करके सुना होगा आपने, नियर बाय बागडोगरा. So सब जगह अलग अलग कल्चर के बच्चे मिले हैं. सो सेम KU में भी हमारे पास, बिकॉज आपको पता है कि KU में नर्सिंग आए बस कुछ दिन हुए हैं, तो डिफरेंट कल्चर के बच्चे हैं. मोस्टली आसाम के बच्चे और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हमारे पास ज़्यादा है. मेंटली वो चाहते हैं कि नाउ न्यू जनरेशन पीपल वांट टू एंजॉय एवरीथिंग. एक्चुअली उन्हें क्या लगता है, काजीरंगा में नर्सिंग न्यू है, देर इज़ फार्मेसी फिजियोथेरापी, बट जितना फार्मेसी फिजियोथेरापी है उससे ज़्यादा जो मेडिकल फील्ड लाइक OT टेक्नीशियन इज़ देयर, OTT देयर, ऑप्टोमेट्री, आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. बट नर्सिंग इज़ अ पर्सन हु हैव टू बी विद द पेशेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो हमारे बच्चे हमें कंप्लेन करते हैं कि मैम बाकी डिपार्टमेंट ड्यूटी में जाता है 2 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए, वाई वी हैव टू स्ट्रगल फॉर 7 to 1, सुबह 7 बजे जाना है, 1 बजे जाना है. तो एक्चुअली उनको ये सिनेरियो सीखना पड़ेगा, क्योंकि नर्सिंग मीन्स यू हैव टू गिव योर टाइम व्हेन, बिकॉज यू आर हैंडलिंग ए ह्यूमन बीइंग. डॉक्टर भी आएगा, दवाई लिखेगा, वो भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में राउंड करना होता है, तो वो एक एक को देख के चले जाएंगे. बट नर्स इज़ अ पर्सन हु हैव टू स्टे इन दैट
आप चाहे सर्जरी वार्ड में हो, चाहे मेडिसिन वार्ड में हो, चाहे आईसीयू में हो, यू हैव टू स्टे फॉर दैट 6 आवर्स और 8 आवर्स उनके सारे रूटीन्स को देखने के लिए, उनके सारे चीज़ों को हैंडल करने के लिए. सो ये चीज़ों को बच्चों को समझाना है मुझे. और कभी समटाइम्स during our those programs and all, student used to say कि मैम other departments ने हमें टीज किया है. Like boys used to say कि हमें शायद ward boy बोला है. So I said whatever, let them say whatever they want, because everyone have their opinion, but they don't understand how nurses have to work hard, how nurses को कितना टाइम देना पड़ेगा, वार्ड में कैसे रहना पड़ता है. हम परफेक्टली ड्रेस भी पहने, हमारे पेशेंट्स कैसे हमें नहीं पता है, कभी गंदे होंगे, कभी अनटाइडी होंगे, उनको उनके हिसाब से हमें हैंडल करना पड़ता है. डिफरेंट कल्चर के होंगे, डिफरेंट कास्ट के होंगे, तो इन सब को समझने के लिए हमें अलग अलग माइंडसेट को समझना पड़ेगा. नर्सिंग का जो ये जो है बच्चों में आना है कि लाइक हमारे साथ में हम सब नर्सिंग पढ़ने जाते हैं, तो हमें इतना ये गलत नहीं लगता है कि हमें कोई चिढ़ा दे या कुछ, क्योंकि सबको पता है कि हर एक घर में एक नर्स तो ज़रूर है, बिकॉज दे बिकम NRIs और दे यूज टू परस्यू जॉब एनीवेयर. सो ये बच्चों में लाना है कि ये इम्पॉर्टेंट है. जितना हम ह्यूमन बींग्स के साथ अटैच्ड होंगे, मे बी ऐसा कोई जॉब इन फ्यूचर नहीं होगा. फार्मासिस्ट भी होगा, बट फार्मासिस्ट के जगह पे होगा और जब ज़रूरत होगा तब दवाई देगा. न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन होगा, खाना जब ज़रूरत है तब देगा. इवन फिजियोथेरापिस्ट आपके लिए आएगा, 15 मिनट एक्सरसाइज कराएगा, आपको करके चला जाएगा. एवरीबडी हैव देयर रोल. येस, वी कांट डू देयर रोल्स, बट नर्सेस पीपल डायरेक्टली अटैच्ड होगा. वो उनके साथ रहेंगे, समटाइम्स उनके घर की बातें भी सुनेंगे. जैसे ओल्ड एज लोग होते हैं, बहुत सारे लोग पेरेंट्स बच्चे छोड़ दिए होते हैं या फिर कोई देखने वाले नहीं होते, तो उन सब के साथ इमोशनली अटैच होने के लिए और ह्यूमन बींग्स के साथ अटैच्ड होने के लिए ये नर्सेस ही रहेंगी. इन फ्यूचर ऐसा भी सीन आएगा, जैसे कि अभी हम होम नर्सेस रखते हैं, घर में कोई नहीं है, अगर बच्चे दोनों जॉब कर रहे हैं. इवन आई ऑल्सो डन दैट थिंग फॉर माई मदर बिकॉज आई वॉज नॉट स्टेइंग विथ हर. सो उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, एक बॉन्ड हो जाता है. वी आर नॉट रिलेटिव फ्रॉम ब्लड, बट वी आर द पीपल. वो चाहे कितने भी कोई भी कल्चर के हों, वी डोंट आस्क देयर कास्ट, वी डोंट आस्क देयर कल्चर, कहीं के भी हो, वी यूज टू गिव द केयर. तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट है और ये जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, जिस दिन हमारे KU के बच्चों में आएगा, नॉट इन द स्टार्टिंग पीरियड, इट विल टेक टाइम, बट वंस दे विल एंटर टू देयर जॉब और वंस दे विल गो टू दैट थिंग, नो, दे विल अंडरस्टैंड कि हाउ नोबल व्हाट वी आर डूइंग. क्योंकि सब लोग डॉक्टर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, नर्सेस को ये भी फील होता है, बट इवन सम डॉक्टर्स आर देयर, मेनी ऑफ देम आर देयर. मैं भी किसी हॉस्पिटल में सर्टेन टाइम के लिए नर्स इंचार्ज था, तो हमेशा दैट सर यूज टू से व्हेन यू विल गो आई विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज देयर. तो वहाँ पे गायनाकोलॉजी का डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो वहाँ पे बहुत सारे सर्जन आते थे, ऑप्शन गायनिक. तो वो सर लोग आज भी कभी कभी टीचर्स डे पे मैसेज करते हैं, समटाइम्स दे यूज. सो वो कहीं ना कहीं हमारा सिग्निफिकेंस है व्हाट वी आर डूइंग. सो ये अंडरस्टैंडिंग हमारे स्टूडेंट्स में आना चाहिए नहीं, हम बीइंग ए टीचर हम लाएंगे वो इमोशनल अटैचमेंट, वो केयरनेस, वो नोबेलिटी वाला फीलिंग. सो जब वो हमारे बच्चों में आएगा, ऑब्वियसली दे विल बिकम दैट पार्ट. तो यही है ना, नोबेलिटी जहाँ आएगा और इमोशनल अटैचमेंट आएगा, स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, तो एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड होगा. आई होप्स लाइक दैट. Definitely. And sir, this is the final question. Your word of advice to the existing nursing students, और जो आगे यानी कि नर्सिंग को एज ए कैरियर लेना चाहे, एज ए प्रोफेशन लेना चाहे, उनके लिए योर वर्ड ऑफ एडवाइस. See, being a new course, just a 2-year-old course, the Kaziranga University student has given the impression to the whole Jorat that the quality and the standard of education provided by the Kaziranga University with the help of the management, it's far better than the other institution, not only in Jorat, in some part of Assam, means
we cannot compare with downtown, we cannot compare with global university, because they are much more older than us. They have already 2 or 3 batch postdoc students, but we have only 2 batch currently, and from 2025 we will be having the 3rd batch. In spite of that, the impression given by the student and the teachers in and around Jorhat and the whole of Assam is impressive. Recently, some few weeks back, there was an meeting called by the Jorhat Medical College, and they have given a good impression, a good appreciation, telling that all the Kaziranga students, they are performing well, they are punctual, they are sincere, they are faithful, and they are at the same time knowledgeable, and they are ready to do their nursing care fully. So they appreciated us, and they used to give complaint to other institute who used to come there. Lots of the advantages and the level of our student compared to others, and the facilities given, means being a novice, we are trying to upgrade, and the management of KU, the administrative team are helping us. And for those who wants to pursue career in nursing, that is what students are not getting the booking seat. Okay. It's almost full, and they are not getting the seat. That much demand nursing is having, and the scope of nursing, as we were discussing early, there are different type of nursing who is working in the low grade. It's also nurse who is working at the high level, like me, like other profession, they're in the high grade nurse. So it's up to the nurse which level they want to prefer. If they want to be in the low level, they can become with a ANM, with a GNM course. If they want to upgrade them, they have to pursue degree, post degree, doctorate. There are sub-specialization. So it depends upon their readiness, their attitude. It depends on that. So if they want aiming for a higher level, they should go with a higher degree, higher qualification, and not means in spite of giving all this quality and all the support, I believe that the fee what the KU is demanding compared to other is cheapest, and is the best, nominal. So in other institute they are charging more, even then they are not providing up to the level facilities. Right. So even in the upcoming years, there will be lots of competition to get admission in KU. So be prepared, and it's a right choice to be in KU. গতিকে আজি আমি বহুখিনি কথা পাতিলোঁ, বহুখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু কথাখিনিৰ মাজৰ পৰা মই যেটো বুজিলোঁ, নাৰ্ছিঙৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক যিসকলে নাৰ্ছিং পঢ়িম বুলি পৰিকল্পনা কৰিছে বা আগলৈ ভাবিছে, পৰিসৰটো বহুত বহল। বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কৰ্মক্ষেত্ৰত বা কাইলৈ যদি চাকৰিৰ কথা ভাবে, তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণে নিয়োগ হ'ব পাৰে। মই আজি ভবাই নাছিলোঁ, কথা পাতি পেলাই গম পালোঁ যে নাৰ্ছিঙৰো কিমানখিনি বিভাগ আছে। পেডিয়াট্ৰিক নাৰ্ছিং আছে, মেণ্টেল হেল্থ আছে, OBG, এডাল্ট হেল্থৰ কথা আমি পাতিলোঁ। তাৰোপৰি মেমৰ পৰা আজি আমি আচলতে গম পালোঁ, ঘৰতে যদি কাৰোবাৰ কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট হয় বা ষ্ট্ৰ'কৰ সন্মুখীন হয়, কেনেকৈ সেই পেচেণ্টজনৰ লগত ডিল কৰিব লাগে, বা তেওঁক আমিতো সোনকালে ঘপককৈ হস্পিটেললৈ কোনেও নিব নোৱাৰে, ঘৰতে থাকি পেলাই কোনখিনি প্ৰতিকাৰ ল'ব পাৰে সেই বিষয়ে আমাক ক'লে। আৰু ছাৰেও বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে, বিশেষকৈ নাৰ্ছিং আৰু চাৰ্জাৰীৰ কথা আমি জনাই নাছিলোঁ, সেই বিষয়ে আমাক ক'লে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, মই যিটো ভাবোঁ আমাৰ কথাৰ মাজতো সেইটো উত্থাপন হৈছে, আমি আচলতে কেতিয়াবা কোনোবাখিনিত মানুহক সন্মান দিব নাজানো। আমি যেনেদৰে ডক্তৰ এজনক যি চকুৰে চাওঁ বা যিটো সন্মানেৰে তেখেতক আমি আঁকোৱালি লওঁ,
নাৰ্ছ এগৰাকীকো আমি সেই একেই সন্মান আচলতে দিব লাগে তেওঁ সেই একেই সন্মানৰ যোগ্য হয় আৰু এইখিনি ভাবোঁ আমাৰ কথা মাজৰ পৰা মানুহ বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব এণ্ড ফাইনেলি ছাৰ এণ্ড মেম থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ইয়'ৰ প্ৰেচিয়াছ টাইম এণ্ড আই হোপ ইন ফিউচাৰ অলছ' we'll continue to discuss things like this and thank you so much again and we should thank you sir Parasda for being a part of UT with Parasda we will be hoping that in the future also we will get this same opportunity. Definitely you are always welcome and you are most welcome and we are very interested to connect and communicate with those people who are very close or get easily attached right. So all human being we are all are different right. So सब साथ में मिलके साथ में बढ़ने में हमारा KU भी आगे बढ़ेगा and we hope for better things in future exactly গতিকে এই কথাৰে আমি আজি খণ্ডটো সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ thank you so much